Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In our today's video, we are going to learn about NES 103 Unit 3 here. The name of the Unit 3 here is Effective Communication. So let's proceed ahead and learn about communication. What is meant by communication? Communication means between two people we are conversing. So basically the passing of information between the two people will be called as the communication. यानी कि अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो भी ideas हैं, उनका आदान और प्रदान. That is called as communication. When we are talking about the effective communication, that means a perfect communication it is. That means it's clear and identified means. So that means जहाँ पर आप clearly और identified ways से अपने ideas को express करते हैं दूसरों तक, that is called as effective communication. So a clear exchange of ideas and information between two or more people is called as effective communication. So that's all about the meaning of effective communication. Now let's learn about the barriers related to communication. यानी कि क्या रुकावटें आ सकती हैं जब हम communication कर रहे होते हैं. So let's learn about these barriers here. The first barrier here says stress or out of control emotions. यानी कि जब हम out of control हो जाते हैं, जब हमारे अंदर इमोशंस भरे हुए होते हैं तो हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हियर शोज यू दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस टू अ जस्टिफाइड वे. यानी कि एक तरीका होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, पर अगर आप उसे नहीं कर पाते, यानी कि आप अपने इमोशंस को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, साथ ही आपका कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल खराब हो जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द बैरियर्स. लेट्स कम टू द सेकेंड बैरियर हियर व्हिच इज लैक ऑफ फोकस. सो दिस यूजुअली happens between a teacher and a student. अगर एक टीचर कोई आइडिया कन्वे कर रही है और बच्चों का फोकस नहीं है, उनका कंसंट्रेशन नहीं है, इन दैट केस देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि स्टूडेंट की तरफ से हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आएगा. अगेन दिस शोज अस लैक ऑफ कम्युनिकेशन. द थर्ड वन हियर इज इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज. सो व्हाइल अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग नियर अ टीचर एक्सप्रेसेस द आइडिया टू हिम और हर. अब स्टूडेंट की बारी है, रिस्पॉन्स शो करने की बारी है स्टूडेंट की तरफ से. अब ऐसे में अगर उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं है, द चाइल्ड इज टू मच नर्वस और ही इज एग्जैजरेटिंग द सिचुएशन, एनीथिंग कैन बी देयर इन अ चाइल्ड्स माइंड. सो हियर अगेन द चाइल्ड इज lacking the way he is conversating with the teacher. यानी कि उसका वे जो है वो सही नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो सही नहीं है अभी कम्युनिकेशन के लिए. The next one, that is the fourth barrier here, is language barrier. So there are so many languages which are used up in India, right? It can be Gujarati, Marathi, it can be Rajasthani, it can be Punjabi, Haryanvi, etc. So many languages are there. In that case, if the teacher is not able to understand any of these languages, if the child is speaking Haryanvi and teacher is not able to understand this language, then this is going to lead the language barrier. And language barrier is directly going to affect the communication process between the teacher and the student. So this is the language barrier. The next one, that is the fifth one, is physiological barrier. Physiological means physique. So basically here we are talking about the physical factors around us. अगर आपके पास टेलीफोन है जिसमें अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, so the network issue is going to definitely affect your communication process. So this is usually happening nowadays because of corona. We all are taking the online classes and due to the online classes we all are facing a lot of network issues. So network issues की वजह से क्या होता है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो कन्वे नहीं हो पाता बच्चे तक. अब ऐसे में क्या होगा, जब बच्चे तक आइडिया नहीं पहुंच पाता तो उसका आंसर कुछ डिफरेंट ही आता है हमारे पास. सो दैट इज वेयर वी कैन सी दैट देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. The next one, that is the sixth barrier here, is physiological and psychological barrier. So here psychological barrier means the mindset of the child. What is the child thinking? Has he memorized the thing? Was he paying attention? Is he interested in the thing? So all these things are a part of psychology of a child, the mindset of a child. If the child is interested, he is going to pay the attention. If he is going to pay the attention, he is going to memorize the things. So each and everything in psychology is linked with each other. अगर ये सभी चीज़ें लिंक है बच्चे के अंदर, अगर बच्चे का एटीट्यूड है पढ़ने वाला, उसके साथ साथ वो अटेंशन पे करता है, वो फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है, उस टाइम पर टीचर की बात को अच्छे से समझ पाता है. सो ऑल दीज वेज गेट टुगेदर टू लीड टू अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. पर अगर इनमें से वेज नहीं हो पाते हैं तब क्या होता है, कम्युनिकेशन लैक हो जाती है, वहाँ पे कम्युनिकेशन के जो मीन्स है वो खराब हो जाते हैं. द लास्ट बैरियर हियर विद अस इज द एटीट्यूडिनल बैरियर. सो एटीट्यूडिनल वर्ड इज मेड आउट ऑफ द वर्ड ऑफ एटीट्यूड.
सो दैट मीन्स यहाँ पे बच्चे का अगर एटीट्यूड नहीं है पढ़ने का, उसका मन नहीं है पढ़ने का, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाई के अंदर, या फिर टीचर का पढ़ाया हुआ जो मेथड है उसे समझ में नहीं आ रहा, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड बिकम्स नेगेटिव टुवर्ड्स स्टडीज. और ऐसा होने पर क्या होगा, देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू आंसर स्ट्रेट फॉरवर्डली टू द टीचर. सो दीज आर ऑल द बैरियर्स दैट लीड टू destruction of the communication. So that's all. Let's proceed to the next topic. So the next topic here is overcoming the barriers of effective communication. यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, barriers पढ़े थे, ऐसी चीज़ें, obstacles जो कि हमारी conversation को रोक सकती है और हमारे communication को खराब कर सकती है. Now we are going to learn about how are we going to overcome these barriers. यानी कि उन barriers को हटाते हुए हम एक अच्छी communication के लिए कैसे proceed कर सकते हैं. So let's proceed here. The first point here is communicate what is needed, that is relevant information. So the first point here says relevant information. Whenever we are communicating to a student, maybe to one other person, to your colleague, to your parents, whomever you are talking to, किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके साथ relevant information share करना ज़रूरी है. So communication is all about sharing your ideas, sharing your thoughts, but they should be relevant to a topic. They should not be out of a topic. अगर आपसे कोई discuss कर रहा है किसी chapter के बारे में मे बी, और अगर आप किसी और चैप्टर के बारे में उसके साथ बात करने लग जाओ, इट बिकम्स क्वाइट इररेलेवेंट एंड दिस लीड्स टू स्टॉपेज ऑफ द कन्वर्सेशन हियर. सो दैट मीन्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस itself ends here. So here we get the point that all the information that you're conveying to the people should be relevant. It should be related to the topic. The second point here says avoid the slangs and the casual information. Supposedly you're a manager of an officer, you're sitting among so many people and now you're using some casual information, कोई casually आपने बात बोल दी which does not suit your attitude, it does not suit your personality, then this leads to stoppage of the conversation. Again, this becomes the barrier of the communication. So in that case, you should always keep it in your mind that while you're conversing with anyone, you're expressing your thoughts with anyone, you should never use some slangs, you should never use some abbreviations maybe, and some casual content. So you have to be very particular, it should be relevant. Nowadays, I can see that on WhatsApp, we usually use words like KKRH. Now, not everyone is aware of these KKRH types words or OOTD words like Instagram is using. So not everyone is aware of these things. So instead of using these, you can instead make use of the full forms. क्या कर रहे हो instead of KKRH. So it would be more clear, it would be more relevant in that case. So the third point here with us is remain aware of the cultural differences. As we read that the language barriers do exist between the people. So हमें पता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग languages use करते हैं. अगर आपको वो language नहीं आती है, try to converse in English or maybe Hindi, which is a neutral language for almost all of us. तो यानी कि ये languages कुछ ऐसी होती है जो लगभग सभी लोगों को आती ही हैं. So like you have to converse, a Punjabi person needs to converse with a Haryanvi one and is not able to understand the terminology that he or she is using. So in that case, both of them can either use Hindi or they can use English. So this becomes an neutral way of conversing with others to maintain the communication with other people. The next one here is stay open-minded for the question answers. Let's here take the example of a classroom again, teacher and student relationship. अगर हम बात करते हैं एक teacher की, a teacher is asking a question to a student and is expecting him or her to answer the same thing as he or she is थिंकिंग. जैसा टीचर सोच रहे वैसा ही उनको आंसर डिमांडेड है, जो कि ज़्यादातर होता है हमारे एग्जाम पैटर्न में. सो यहाँ पर अगर हम लोग यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग हो जाता है बात. अभी कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि इज़ एम आर भी वहीं पर लगा होना चाहिए जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ए एंड द की भी गलती नहीं होनी चाहिए पेपर्स के आंसर्स में, बच्चों के आंसर्स में नहीं होना चाहिए. अब अगर ऐसा होता है और बच्चा कुछ मिस्टेक कर देता है तो टीचर इज़ नॉट वेरी ओपन minded, वहाँ पर वो मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं. सो हियर वी आर सेइंग दैट व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग, वेदर इट्स इन वर्बल फॉर्म और नॉन वर्बल फॉर्म, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है. सो जस्ट लाइक आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ द एग्जाम हियर, तो अगर कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और उसमें कुछ माइनर डिफेक्ट्स है एज पर यू, आपके अकॉर्डिंगली कुछ अलग सी कमियां आपको उसमें दिखाई दे रही है, डिस्क्रिपेंसीज आपको दिखाई दे रही है, स्टिल यू नीड टू जस्ट कंटिन्यू योर कम्युनिकेशन. इट्स नॉट दैट यू नीड टू ब्रेक द पाथ
there itself. So make it a point that you are open-minded while you are questioning someone and just wanting him or her to answer you. So while question and answers round is going on, you need to be very open-minded. You have to think in a divergent way because the answers may differ accordingly. All the people are very unique. Next one here is clarify the ideas before communicating. Again, you need to clarify your idea. आपने कुछ सुना और आपको लगा कि उसका perspective तो ऐसा है. You need to clarify whether he or she wants to say the same thing which you are thinking or not. कई बार ऐसा होता है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लीड करते हैं. वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम आइडियाज़ को क्लैरिफाई नहीं करते हैं. किसी ने हमको कोई बात कही, हमें बोला, एक सजेशन दिया कि आपको इस टाइप से वीडियो क्रिएट नहीं करनी चाहिए मैम, यू शुड गो फॉर अ डिफरेंट वे, एंड आई टुक इट इन अ रॉन्ग वे. सो हियर देयर इज miscommunication, there is misunderstanding between the two people because I couldn't clarify his or her idea here. If could I had just asked him or her directly कि आपका क्या कहने का मतलब है, please explain me properly, so I could have worked on that thing in a positive manner. So clarifying the ideas is more important than just assuming the things. Next one is beware of the tone and the content of the message. So content of the message means relevant information, and beware of the tone. So that means your tone while you're talking with others should be very correct. It's not that you need to be rude and harsh all the times. It's not that you need to be very soft spoken or polite every time, because not all the people use the same tone always. So make a difference between the different kinds of tones. Try to inculcate some kind of a rhythm in your language, some pitch there in your language. That's very important, and it makes your communication process very good. Next one is ensure the proper feedback. So अगर आप किसी मीटिंग का पार्ट हैं, अगर आप अपने क्लासरूम में हैं, कहीं पे ऑफिस में हैं, do not forget to greet them at last. अपने स्टूडेंट्स को भी ग्रीट करना मत भूलो, उनसे ये पूछना मत भूलो कि उनको आज का सेशन कैसा लगा था. So that's more important. Taking a feedback helps us to gain the information about our own session. So इसमें क्या होगा, अगर आपको फीडबैक मिलेगा आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने एक्सीलेंट लेसन्स को भी आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं. सो ऑलवेज मेक यूज ऑफ द फीडबैक. द लास्ट वन हियर इज बी अ गुड लिसनर. हमेशा चपड़ करना ज़रूरी नहीं होता है. कई बार ऐसा भी होता है दैट वी नीड टू मेक अस अ गुड लिसनर. वी नीड टू लिसन एट टाइम्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू anyone's question or maybe a query. So here ends the topic, overcoming the barriers of effective communication. Let's proceed ahead. So here we are on the last topic of this unit, effective communication. Let's know about the 7 C's of communication. The 7 C's are very important. You can put this topic into any topic you want to. So whenever you're finding a question related to communication, you can always put this topic, 7 C's of communication, within that to elongate your answer, to make it more impressive. So let's learn about this. 7 C's of communication are clarity, completeness, conciseness, concreteness, courtesy, correctness, and consider. So these are all the 5 7 C's. We are going to discuss them one by one. The first one here is clarity. We have been reading that clarity is very important. We need to clarify our ideas. अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो उसको clear idea को समझने की कोशिश करो. If you're not able to understand something, it's never a matter. You can ask it again. So clarifying the idea is very, very important. Next one is completeness. Completeness means the complete details. आप ऐसा ना करें कि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं एंड बाद में बाकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू डू. यू ऑलवेज नीड टू गिव द कंप्लीट डिटेल्स, हैंड ओवर द कंप्लीट डिटेल्स टू द रिक्वायर्ड पर्सन. दिस इज कंप्लीटनेस. द नेक्स्ट वन इज कंसाइजनेस. कंसाइजनेस मीन्स समथिंग विच इज प्रिसाइज, समथिंग विच इज शॉर्ट डाउन. सो अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो घंटों तो आप बात नहीं कर सकते हर बार. सो यू नीड टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर प्रेजेंटिंग द प्रिसाइज डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. अगर मुझे एक डेमो सेशन कंडक्ट करना है, मैं क्या करूँगी? आई एम गोइंग टू टेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर, देन आई एम गोइंग टू टेल द टाइमिंग्स, देन आई एम गोइंग टू टेल द डेट एंड द डे. सो दिस इज हाउ, एंड ऑल्सो आई कैन एड ऑन देयर द टॉपिक. सो दिस मेक्स इट वेरी प्रिसाइज. किसी को भी पढ़ना है 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आज मैम क्या पढ़ाने वाली हैं. सो यू हैव टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे. सो हियर यू नीड टू फोकस ऑन द कंसाइजनेस. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू ब्रीफ एवरीथिंग टू द पीपल.
The next one here is concreteness. Concreteness means किसी भी idea के पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए. There should be an expression behind that thing. It's not that you have to express something which is irrelevant, something which is out of the world. ऐसा कुछ आपको express नहीं करना है. You need to express, you need to present your thoughts on something which is relevant, which is needed at the time. So that is called as the concreteness. ठोस वजह होनी चाहिए किसी भी पीछे की, कोई भी चीज बताने के पीछे की. The next one is courtesy. You need to maintain your companionship between the people. You have to be soft spoken at times. You need to be polite with the people. And of course, keep your temper down. It's not that you need to be harsh and rude with the people. So here, maintain your courtesy. This presents a good personality of yours. Next one is correctness. Your ideas should be completely correct. आप कोई भी गलत information किसी को देंगे, this is never going to give a good attitude, a good idea of yourself to a next person. So कभी भी कुछ गलत information नहीं देनी चाहिए. You always need to focus that your information is completely correct and original. The last one here is consider. You need to consider the thoughts of some other people as well. Whenever you are talking to the people, just make a point that you are a good listener too. Not only a good speaker, you need to be a good listener as well. So consider the points given by others to you. So that's how we end the unit, effective communication. I hope you all have understood this unit very well. So thank you so much for watching. Do not forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye bye and see you soon with the more videos.